Hello everyone, my name is Shubham Dubey and I welcome you all on Creative Edge YouTube channel. Today we are going to discuss non-verbal reasoning for your design entrance exam. This video lecture is a part of marathon series for you if you are preparing for any design entrance exam, whether it is UCEED, NID or NIFT. So before we move on, bring all of your friends on this video channel so that उनके लिए भी ये वीडियो बहुत बेनिफिट होने वाला है. And along with that, if you are new to this channel, please do not forget to subscribe this channel. Also, must go to the study material that has been mentioned in the description box. So वहां से आप जो है आपके लिए स्टडी मटेरियल आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं. So without delaying further, let us start today's session. And I would like to also tell you that I will be entertaining your chat replies as well. So if you have any doubts, you can ask me your queries in the chat box. So very good evening, Shomik. So let's get started. Okay. So as you can see that these are the topics that we are going to discuss today. Puzzle, character puzzle, syllogism, distance direction, and clock. These are the area of focus of our today's session. ठीक है, हम बहुत ही चीजों को क्रिस्प रखेंगे. जो जो प्रीवियस क्वेश्चन है मैं उन पे ज्यादा इस बार फोकस कर रहा हूँ सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि क्या क्या आ रहा होता है. ऑल्सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर NIFT एंड UCEED, why I'm taking name of these two exams क्योंकि verbal reasoning इन दो एग्जाम्स में आ रहा होता है. NID में not to much extent, but if you are preparing for NIFT or UCEED, you must go through this channel. And this is must go session for UCEED participants. And if you're for NIFT aspirant as well, तो आपको ये देखना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चन, कितने अच्छे क्वेश्चन यूसीड पूछता है ऑफ वर्बल रीजनिंग. राइट, आपका बहुत सारा आइडिया यहाँ पर डेवलप होगा. बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, विच आर पार्ट ऑफ योर NIFT एज वेल. राइट, सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को. सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ. सो जस्ट हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन. दिस इज अ वेरी फर्स्ट पजल दैट आई हैव ब्रॉट फॉर यू. एंड इन दिस क्वेश्चन वी विल बी लुकिंग एट व्हाट एग्जैक्टली हैज बीन आस्क्ड. तो पढ़िए सभी लोग, और मैं भी पैरेलली आप लोगों के साथ करते जाता हूँ इस क्वेश्चन को. क्या बोला गया है? सो वी हैव A, B, C, D, E and F. There are 6 robots which has been mentioned to us. Each robot can contact some other robots, though none of the robots can contact all the robots. So I hope यहाँ तक आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा कि क्या बोलना चाह रहा है क्वेश्चन. द रूल्स ऑफ कॉन्टैक्टिंग आर एस फॉलोज. अब पढ़ते हैं सभी रूल्स को. हमारे पास 6 रोबोट हैं, A, B, C, D and E. तो मैं यहाँ पर सभी रोबोट्स का नाम भी यहाँ पर लिखता चलूंगा. और सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को अगर मैं पढ़ूँ तो क्या बोला गया है? B कैन कॉन्टैक्ट E. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सर्कुलर मैनर में, लेट अस डू वन थिंग, कि मैं सर्कुलर मैनर में एक काम करता हूँ कि सभी रोबोट्स को अरेंज कर लेता हूँ. नाउ इट इज नॉट कंपल्सरी दैट यू अरेंज देम इन सर्कुलर मैनर. आप किसी मैनर में आप अरेंज कर सकते हैं, बट फॉर द सेक ऑफ easiness to understand it better, मैं इनको सर्कुलर मैनर में अरेंज कर रहा हूँ. सो आई हैव A here, I have B here, I have C here, D, E and F. So these are the information, these are the person that I have, robots I have which needs to be connected. Now B can contact E. So you can see that B can contact E. Now this arrow signals that B can contact E, but is it necessary that E is also going to be contacted by B? Let us look at this. Now, as soon as you read the first instruction, ये doubt आपका clear हो जाएगा. B can contact E and can be contacted by C. So B can be contacted by C. That means you can see that कि पहले statement से आपको समझ में आ रहा होगा कि B E को contact कर सकता है, but vice versa is not true as of now. And can be contacted by C. So B can be contacted by C. That means C can send message to B, but B cannot send message to C. I hope ये आइडिया सभी लोगों को यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा. आई एम लुकिंग एट योर चैट्स इन द चैट बॉक्स. कुछ भी डाउट हो आप पूछेगा जरूर. ठीक है. नाउ D can be contacted by A. So D can be contacted by A. Then E and F. So D can be contacted by A, E and F. I hope
यहां तक सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आगे क्या बोला है, एफ कैन कॉन्टैक्ट सी, सो दिस इज एफ, एफ कैन कॉन्टैक्ट सी, F can contact C. D can contact C and E. So D can contact C as well as E. That means the contact between D and E is bidirectional. I hope everyone is realizing that. Now, D can contact C and E. So I have marked that. Then let us come to this statement. F can be contacted by A. So F can be contacted by A. So F will be sent message by A. A robot can receive a message from other robots that can contact it. What does it mean? For example, A and F. So A can send a message to F, as I've already mentioned you, but F cannot do the same. However, if you look at D and E, D can send message to E and vice versa. And it can relay the message to another robot it is allowed to contact. ठीक है, तो आपका जो E है वो D को मैसेज भेज देगा, डी फर्दर सी को भेज सकता है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? नाउ लेट अस रीड व्हाट एक्चुअली द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोबोट्स दैट आर रिक्वायर्ड बिटवीन ए एंड रोबोट बी टू सेंड अ मैसेज फ्रॉम ए टू बी। सो ए से बी तक आपको मैसेज सेंड करना है, तो आप किस तरह से सेंड कर सकते हैं, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग। तो ए से मैं मैसेज देना चालू करूंगा। नाउ आई हैव टू चॉइस, आइदर आई पास थ्रू एफ और पास थ्रू डी। ठीक है, बट ए से एफ तक मैसेज देता हूं तो देखेंगे क्या होगा, कितने रोबोट्स की रिक्वायर होती है। ए से एफ तक देता हूं तो एफ से मुझे या तो मैं डी को दे सकता हूं या मैं सी को दे सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग सभी लोगों को आई होप समझ में आ रहा होगा कि ए से मैं एफ को मैंने मैसेज भेज सकता हूं या फिर मैं ए से डी को मैसेज भेज सकता हूं। सपोज कीजिए इफ आई एम सेंडिंग फ्रॉम ए टू एफ, सो एफ के बाद मेरे पास कौन कौन सा रहता है, आइदर आई कैन गो टू सी और डी। तो या तो मैं एफ से सी को भेज सकता हूं या मैं डी को भेज सकता हूं। These are the choices I have. ठीक है, तो C and D. Now suppose if I'm sending it to C, तो C से मैं B को भेज सकता हूँ। That means from A to B, I have used F and C in between. तो minimum two robots are required in this scenario. क्या ये D के केस में भी ऐसा होगा क्या कि दो रोबोट तो आपके ऑलरेडी यूज हो गए, A से F, F से D, देन D से C और फिर C से B. So you can see that you are using three robots here. Obviously, this should not be chosen because we have to find out the minimum number of robots. ठीक है. Now look at this path. If I am sending message to A to D, so A से D तक भी अगर मैं मैसेज भेजता हूँ तो D भेजेगा C को और C भेजेगा B को. That means in any case, I will require two robots at least. So answer to this question is two. I hope सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. All the online people who are with me. तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट अस मूव अहेड विद दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। नाउ द वेरी सेकंड क्वेश्चन रीड्स दैट, सो दिस इज अगेन अनदर पजल एंड दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग व्हेन यू सॉल्व इट। क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, अ पर्सन हैज सिक्स डॉटर्स पी क्यू आर एस टी एंड यू who live in four metros, so you have six daughters, so let me write down their name P Q, then I am going to have R S T and U. These are the six daughters a person have. So these are the names of the daughter. These are the names of the daughter. Then what has been asked further? They are pilot, accountant, diplomat, banker, commando and teacher. तो उनके प्रोफेशन के बारे में मुझे यहाँ पर दिया गया है। क्या कुछ और भी इंफॉर्मेशन दी है? चलिए देखते हैं। They are three daughters are married. So I have been told whether they are married or not. तो उनका मैरिटल स्टेटस भी मुझे दिया गया है, मैरिटल स्टेटस। ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, इफ समवन इज मैरिड आई एम गोइंग टू यूज दैट राइट मार्क, इफ समवन इज नॉट आई एम गोइंग टू यूज द क्रॉस मार्क, राइट। सो आपको क्या बोला गया, थ्री डॉटर्स आर मैरिड, सो यू हैव थ्री डॉटर्स हु आर मैरिड। देन एस हु लिव्स इन मुंबई, so you have S lives in Mumbai. Okay, further
You have names of city as well. So you can see that you have four variables in this question. So this question is going to be very interesting to solve. ठीक है? So यहाँ पर city किस में रहते हैं? This is going to what I'm going to write. So S who lives in Mumbai is a diplomat. So S के बारे में मुझे बोला गया है कि उसका प्रोफेशन तो डिप्लोमेट है और वो रहता मुंबई में है. Then those staying in Kolkata are commando and accountant. So whosoever is in Kolkata, they are commando and accountant. ठीक है, ये दो इंफॉर्मेशन को हमने पढ़ लिया अच्छे से. One of the two Mumbaiites is married. So whosoever is living in Mumbai, one is married, another one is not married, while two of the unmarried ones live in Kolkata and Delhi. So कोलकाता में जो भी रहता है, दिल्ली में जो भी रहता है, दे आर अनमैरिड. आई होप किस तरह से मैं इंफॉर्मेशन को लिख रहा हूं, इट इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन. द टीचर लिव्स इन चेन्नई. सो वी हैव अ टीचर who lives in Chennai, right? Then the T, the accountant is married. So T is accountant, and I know that accountant lives in Kolkata. So accountant is married and he lives in Kolkata. Kolkata. Also, I know one thing that the person who is living in Kolkata, एक लाइन और मैंने पढ़ी थी, those staying in Kolkata are commando और accountant. ठीक है, तो एक accountant है और एक commando है. ठीक है, अभी तक यहाँ तक हमें क्लियर हुआ है. Teacher lives in Chennai, fine, I am okay with it. T, the accountant is married, fine. U lives in Mumbai and P in Delhi. So P is in Delhi, U is in Mumbai. Q is a commando and commandos do not marry. So Q is a commando. So Q is a commando and commando is not married and commando lives in Kolkata. Now I hope everyone is realizing that we have only one person, one profession left who is teacher who lives in Chennai. So you can see that this is the only row which is left. This is the only row which is left. So I should fill it with city as city to be Chennai and profession to be teacher. Profession to be teacher. Okay, now I also know that two of the Mumbaiites is married. So Mumbai वाला जो भी person है, मुंबई में मेरे पास कौन है? I have this person in Mumbai. This person was also in Mumbai. One is married, one is not. So ये unmarried भी हो सकता है, married भी हो सकता है. ये unmarried भी हो सकता है, ये married भी हो सकता है. So out of the two, one is going to be out of one is going to be married and one is going to be unmarried. अब यहाँ पर आप देखिए कि marital status. If I particularly look at the marital status, whom which of the people are confirmed that they are married or not. So Q is something whom you can comment on. P का पता नहीं है. ठीक है, मुंबई में से कोई एक मैरिटल, किसी का एक का मैरिटल स्टेटस अनमैरिड रहेगा. So you have Q to be unmarried. Out of S and U, one is going to be unmarried. Right? I hope this idea is clear to you. Then let me check some for other information as well. If I talk about the married people, so I have T who is married people. I believe that teacher in someone. Okay, let me check if I can confirm teacher is married. The teacher lives in Chennai. Okay, so thank you Nayan for your support. I can see your comment. Thank you very much. चलिए, तो यहाँ पर अब हम एक बार फिर से सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं. इफ आई एम मिसिंग एनी, so three daughters are married. This is something I need to confirm that three daughter must be married. So I have as of now one daughter to be married. I am confirm about this. I believe if I make teacher to be married, समझिएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, क्यों ऐसा बोल रहा हूँ. If I consider teacher to be married, so that means I have two person who are married. Out of the two Mumbaiites, I am going to have the third person to be married. आई होप ये आइडिया सबको समझ में आ रहा होगा.
ठीक है, तो 3% वहां मैरिड हो जाएंगे। देन देन इफ आई टॉक अबाउट अदर पीपल, नाउ दिल्ली पीपल इज अनमैरिड, ये मैं मार्क करना भूल गया हूँ, दिल्ली पीपल, दिल्ली पर्सन इज अनमैरिड, इसको मैंने मार्क नहीं किया था। तो अब सबको मैरिटल स्टेटस का कहानी समझ में आ गई होगी। दैट मीन्स three married people are there. Who are those three married people? One is teacher who lives in Chennai. One is accountant who lives in Kolkata. That is R and T respectively. And out of the one person from Mumbai is going to be married. तो ये तीन लोग मैरिड हैं, बचे हुए तीन आपके अनमैरिड होने चाहिए। ठीक है, आई होप सबको ये कहानी समझ में आ गई होगी। नाउ लेट अस लुक फॉर द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड। तो थोड़ा सा हमको इसको अरेंज करने में टाइम जरूर लगा है, बट क्वेश्चन देखते हैं हमसे क्या पूछा गया है। Okay, so now let us read the question. If the banker is unmarried, then pilot is P. So question में यहाँ पर क्या बोला गया है? Let me change my color for so attempting this question. If the banker is unmarried, now banker could be here or banker could be here. If the banker is unmarried, let us think, can banker be here? Can banker be here? If banker is here, that means this person must be pilot. ठीक है, P is a pilot. So let us see if this is possible. तो बैंकर अगर आपका यहां पर होता है, that means this person is going to be unmarried. ठीक है, क्या बोला गया है? बैंकर इज अनमैरिड, तो यहां पर आप बोल रहे हैं कि ये अनमैरिड है। अब अगर ये अनमैरिड है तो यानी कि आपका जो मुंबई का जो दूसरा पर्सन है, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी मैरिड। अब आप देखिए कितने अनमैरिड है कितने मैरिड है। सो यू कैन सी दैट हाउ मेनी अनमैरिड पीपल यू हैव वन अनमैरिड, यू हैव टू अनमैरिड। ठीक है, इसके अलावा you are going to have this as the third person to be unmarried. If I talk about the married people, so I have this confirmed to be married, this confirmed to be married, this is going to be married. So okay, this can work as of now. ठीक है, ऐसा possibly हो सकता है। So if the banker is unmarried, P must be pilot. But is it necessary that यही ऐसा भी हो सकता है ना? Some people may ask also think in this way कि that if banker is unmarried, तो banker तो यहाँ भी हो सकता है, बैंकर तो यहां भी हो सकता है। ठीक है, सो एंड बैंकर इज अनमैरिड, यू कैन सी दैट बैंकर इज अनमैरिड, तो देन द पायलट इज पी, तो पी को तो हम बैंकर ही बोल रहे हैं ना, इस केस में ट्रू नहीं है। दैट मीन्स फॉर वन केस इट इज ट्रू, फॉर वन केस इट इज नॉट ट्रू, तो दैट इज वाई वी आर गोइंग टू डिस्कार्ड दिस ऑप्शन। आई होप everyone is able to understand this question. Okay, so Dean, you're asking the question, how much time should be spent in solving such question in the final exam? Dean, you have asked a very good question, and I would like to tell you that if you're, for example, for UCEED, if I talk about, if you see this long question, you can see that I'm consuming a lot of time in solving this question. Why? This question is going to, only this question has to be answered in this case. So I believe that such type of question should be avoided at first. What do I mean by avoided? I would say that these should be attempted if and only if you have some extra time, once you have gone through the paper, once you have solved all the paper, all the question that you were required to do. Suppose this set ask two or three question, I would say that spend time and go for it. But if it is asking only one single question, you can see that this question is only this question I have to answer after arranging all the data. So at first, I would always advise that do not attempt at first. Keep this question for the last, right? Now, so yes, Poonam, 5 Feb को आपका NIFT है, and you can expect this type of question, verbal reasoning question in your NIFT exam. ठीक है? So यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन को मैंने डिस्कार्ड किया है। नाउ R is a teacher, so I can see that R is a teacher. He is married. He lives in Chennai. Yes, B is correct. Q is unmarried. So can I say Q is unmarried? Yes, Q is unmarried. It is also correct. As I told you, this question is of UCEED, so multiple select option is there. In NIFT, you're going to get single correct answer. So don't worry. NIFT में single correct ही रहेगा, but type of question is going to be like this only. Then, if the diplomat is married, so if the diplomat is married, okay, I consider if the diplomat is married, so then is the banker. So I believe banker cannot be married in that case because banker could be either P or U.
So if diplomat becomes married and banker becomes married also, so the number of married people are going to be increasing. That is why D is also not going to be the correct one. So I hope you must have understood this question very well. ठीक है? If you are not able to, एक बार फिर से पीछे जाइए, आप बहुत अच्छे से उसको कर पाएंगे. थोड़ा सा टाइम जरूर लगा है, बट अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं एवरीवन. नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक सिलॉजिज्म. क्या पूछा गया है? ठीक है, सिलॉजिज्म इज आल्सो कैन आल्सो बी एक्सपेक्टेड इन NIFT as well in UCEED, and for if you are preparing for NATA examination as well or any private college as well, तो भी आपको ये सीरीज को जरूर देखना चाहिए. NID के बारे में मैं ये बोलूंगा कि NID is something which focuses more on non-verbal reasoning, but that does not mean that it is not going to ask you verbal reasoning ever. देयर कुड ऑल्सो बी एलिमेंट ऑफ सरप्राइजेस, तो आपको यहाँ पर इन टॉपिक्स को भी अच्छे से कर लेना चाहिए. बट फॉर नॉन NID पीपल आई वुड ऑलवेज सजेस्ट दैट कि नॉन वर्बल पे ज्यादा फोकस करिए. राइट नाउ लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन. The question reads that all surrealists are melted rock. So we are not interested in the keywords that has been given, but we are interested in all, some, all. These are the keywords that I'm interested in rather than the surrealist, mental, melted clocks. I'm not going to entertain too much this. तो यहाँ पर all surrealists are melted clocks. So इसका diagram कैसे बनाएंगे? We are going to solve such type of question using the Venn diagrams. If you have not, never attempted this type of question, if you have never done this type of question, so in the video section you can go to see the syllogism video. I have made a special video on that. You can simply search on the YouTube by creative with syllogism and you will be finding one video of mine which is 1 month older. So आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप उस वीडियो को रेफर कर लीजिए. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. So all surrealists are melted clocks. So all surrealists are melted clocks. ठीक है? So this is the first diagram that I have made. Then some melted clocks are dullies. So some melted clocks are dullies. So this is the region the second statement is talking about. Then all dullies are macabre works. So all dullies are macabre works. If I'm not pronouncing some word right, so apology from my side. I'm more interested in solving the question, right? So all dullies are macabre works. So macabre works. All dullies are macabre works. So which region the question is focusing on? So let me shade that region as well, online people. So this is the region that the question is talking about. The third statement is talking about. Now some of you may be thinking why I have not intersected, why I have not intersected S with M or D. So I have not intersected them because I have not been told in the statement. So does it mean that they are not related? So I would say that they may or they may not be related. I'm not sure about it. They may be related, they may not be related. So we are not sure about it. So what to do? What to do if conclusion asks for relation between S and M? So we are going to look into that. Okay. So macabre, some macabre works are dully. So you can see that the question has already highlighted the conclusion number one. कौन सा conclusion? Some macabre are dully. So you can see that this is the region the question is talking about. So yes, option conclusion one is absolutely right. चलिए ठीक है. Now let us look at the second conclusion. Some macabre works are melted clocks. So yes, some macabre works are melted clocks. तो यहाँ पर भी ये बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों. ठीक है. So some let me correct myself first. पहले वाले conclusion को करेक्ट करना चाहूंगा मैं. जस्ट अ मोमेंट. चलिए तो पहले वाले में क्या बोले? सम मैकेबल वर्क्स आर दिल्ली. सो ये वाले रीजन की बात की गई है तो ये बिल्कुल सही है. हालांकि मैंने रीजन गलत शेड कर दिया था, अदरवाइज द ऑप्शन इज करेक्ट. सम मैकेबर वर्क्स आर मेल्टेड क्लॉक्स. तो इस वाले रीजन की बात हो रही है बच्चों. ठीक है.
So second conclusion is also correct. Now, some Delhis are surrealist. So again, as I told you, I do not know the relationship between Dalis and surrealist. They may or may not happen. So since I do not know the relationship, but the conclusion is confirming that it is claiming that, not confirming, but the conclusion is claiming that this statement is 100, this conclusion is 100% true. So do we know about it that whether it is 100% true or false? We are just 50-50 confirmed. It we're just 50-50 confirmed that some Delhis are serialist or they may not be serialist. So since you're not confirmed, that is why you will be marking this as incorrect. ठीक है? आपको लॉजिक समझ में आया मैं क्यों इसको इनकरेक्ट बोल रहा हूँ? क्योंकि मुझे इसके बारे में पता ही नहीं है. तो जिसके बारे में नहीं पता है आप उसको सही नहीं मानोगे. Whatever is not confirmed, you will never be marking that as correct. So unfortunately, we have to mark such type of conclusion to be incorrect. So you can see that only first and second conclusion are followed. That is why I would say option C is correct in this case. ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों. Now this question is very good question of distance direction. So, as I told you, UCEED ask a very good question of your topics of verbal reasoning और नॉन वर्बल रीजनिंग टॉपिक. सो ये वर्बल रीजनिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आपने इस टाइप का डिस्टेंस डायरेक्शन का क्वेश्चन शायद ही देखा होगा अगर आप सिर्फ निफ्ट की तैयारी कर रहे हैं. फॉर यूसीड पीपल दे मस्ट हैव सीन दिस क्वेश्चन इफ दे आर अटेम्प्टिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. बट फॉर दोज आर नॉट who are only targeting NIFT and are not looking for any other examination, तो शायद ही उन्हें ये क्वेश्चन देखा होगा. But for building the concept of distance and direction, this is going to be one of the good questions I would always rate. Now, चलिए देखते हैं क्या बोला गया है. पढ़ते हैं सब लोग साथ में इस क्वेश्चन को. So let me first of all change my color of marker. So pick one point on the outermost ring. So this is the outermost ring that you can see. So you have to pick any one point, either E, either SW, either W. What is the meaning of these words? I will be telling you, don't worry. In order to find your way home. So this is your home. You can see that each point indicates the direction of your next move. So for example, E. So E indicates some direction. Now what is the direction named starts with E? It is east, right? So that means now, very many of the students are confused. How should they mark the direction in this question? So let me tell you the standard. This is east, this is west, this is north, this is south. This is the standard way of marking direction. Why do we mark in this way? Because if you ever look at the world's map, so this region is called as east, this region is called as west, this region is called as north, and this is called as south. So you can see that on in world's map, you at the top you see the northern hemisphere, and at the bottom you see the southern hemisphere. तो इसीलिए हम इस तरीके से मार्किंग करते हैं. दिस इज द स्टैंडर्ड मार्किंग. However, if you wish, you can also rotate your map, also rotate your direction. But standard यही है, तो इसीलिए आप इस क्वेश्चन के लिए I would request all of you to go by the standard map. So ये east है, west है, north है, south है. So what we have to find out, we have to start our journey from one of the points in the outermost layer, and then we have to move to our home using the direction mentioned in on these points. तो यहाँ पर सबसे पहले I will talk about E. So this, if I start from this point is telling me to go in the east. So I will go in the east. So that means in this direction I will go, right? Then this point says to go southwest. Now southwest is this region, southwest. So southwest means I would like to go here. Again, it is saying southwest, so okay, I would like to go in the southwest direction. Then southeast. So southeast is basically southeast आपका ये वाला region है. So southeast means I will like to go in this region, right? Then at point N, I'm being told to move in the north. तो north आपका इस direction में जाना पड़ेगा आपको. North. Now this is telling me to go in the west. तो west यानी कि मैं यहाँ पर जाऊंगा. Again I am got to southeast. So southeast जाऊंगा तो फिर यहाँ आऊंगा. फिर north मुझे जाऊंगा. फिर west में जाऊंगा. So you can see that I have trapped in one vicious cycle. West, southeast, north, west, southeast, north, and I will keep on moving in that direction
I will never be able to reach at my home. So that is why I should not be starting my journey from the east. I hope everyone is able to understand this question. अच्छा question होगा ना? Now, let us start with southwest. So you can avoid southwest. By the way, we were given the option. We were given the option. तो हमें तो इन चारों को ही चेक करना चाहिए था. आई शुड नॉट हैव चेक्ड ई, बट चलिए कोई बात नहीं. अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने ई को समझ लिया. तो आपको फिर एक चीज समझ में आई होगी कि यहाँ पर मुझे कहाँ से अपनी जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए. ठीक है. साउथ वेस्ट से भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए, हालांकि ऑप्शन में भी नहीं है तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए. वेस्ट से करना चाहिए क्या? लेट अस लुक एट दिस पॉइंट वेस्ट, विच इज अ वेरी फर्स्ट ऑप्शन. तो वेस्ट में आप जाएंगे तो वेस्ट में आने के आपको यहाँ जाना पड़ेगा. अब वेस्ट में आप जाएंगे तो आपको इतना समझ आएगा कि साउथ वेस्ट से अगर आप रूट पकड़ेंगे, यू हैव चेक्ड फॉर साउथ वेस्ट ऑलरेडी. हाउ हैव यू चेक फॉर साउथ वेस्ट? बिकॉज यू हैव चेक्ड फॉर ईस्ट. सो ईस्ट पर सबसे पहले आप साउथ वेस्ट ही गए थे ना. देन फ्रॉम साउथ वेस्ट यू मूव टू अगेन साउथ वेस्ट, देन साउथ ईस्ट, देन नॉर्थ, देन वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट. You trapped in your vicious cycle. So that is why west is going to be the wrong choice. If I talk about north, तो north से start करूँ, नॉर्थ में जाऊंगा तो अगेन मैं यहाँ पर जाऊंगा और साउथ ईस्ट में जाऊंगा. नाउ लेट अस सी कि क्या मैं नॉर्थ से जा पा रहा हूँ. सो साउथ ईस्ट गया तो साउथ ईस्ट कहाँ पर है बच्चों? नाउ लेट अस लुक एट द साउथ ईस्ट. तो साउथ ईस्ट आपका यहाँ पर है. ठीक है. तो अगेन फिर नॉर्थ, फिर वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट. सो आपका नॉर्थ इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट. नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, इफ आई विश टू स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ है बच्चों? ये आपका नॉर्थ ईस्ट है. दैट मीन्स फ्रॉम दिस पॉइंट इफ आई विश टू स्टार्ट, तो नॉर्थ ईस्ट में यहाँ जाऊंगा, नॉर्थ ईस्ट. देन आई विल मूव टू नॉर्थ. तो नॉर्थ यानी कि आई विल मूव टू हियर. देन वेस्ट, west. So using this option C, I can reach my home. आई होप आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. ठीक है. चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों. नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कैरेक्टर पजल. नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज समथिंग I always advise my students that if you are able to understand this, the logic behind this question in one go, you must attempt this. Otherwise, you should not be wasting a lot of time in this question. However, some logics are followed which जिसको आप समझकर पहचान सकते हैं. But there is always a good idea if you are taking a lot of time or if you are not feeling confident about it, better you skip that. But if you are able to understand, you must attempt it. ठीक है. Because for such type of character puzzle question, even if I get you practice 100 question, but when I give you 101st question, may or may not you will not be may or may not you will be able to solve it or not. ठीक है. तो यहां पर अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है. सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि यू कैन सी दैट सबसे पहले हम इन सभी नंबर्स को देखते हैं. ठीक है. देयर कुड बी मल्टीपल अप्रोचेस टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मल्टीपल आइडियाज यू कैन यूज इट. बट सबसे पहले हम फर्स्ट फिगर को देखेंगे और फर्स्ट फिगर में भी हम सबसे पहले नंबर्स को देख रहे हैं. ठीक है. तो आप ये समझ पा रहे हैं क्या कि sum of the sum of 6 and 4 is 10, the sum of 8 and 2 is 10. सब लोग सोच पा रहे हो ऐसा? कैसा बाकी फिगर्स में भी है? Sum of 5 and 5 is 10, but sum of 9 and 2 is 11, which is close to 10. Which is close to 10. 4 plus 6, 10. 4 plus 5, 9. Close to 10 again. 3 plus something, 4 plus 6, 10. तो इतना सबको समझ में आ रहा है क्या कि दैट मीन्स हो सकता है कि 6,849, the number in the first row, has been added with the number in the third row, 6475. तो आप इन दोनों का सम पहले चेक करिए कि कितना आ रहा है. सो लेट अस ऐड 6849 एंड 4675. इनको ऐड करते हैं. 9 plus 5 is 14, 4, 1, 7 plus 5, 12, 2, carry 1, 15, 5, carry 1, 11. This is the sum of the first row and the third row. I'm not considering these number individually, rather I'm considering this to be a one single number, right? Now let us find out the sum of the second row and the fourth row. ठीक है. So 8659, 8659 and 2865. ठीक है. अब इनका सम निकालते हैं. So 9 plus 5, 14, 4, carry 1, 2, 1,
5, 1, 11. You can see that both the sums are equal. सब लोगों को समझ में आया? So you can check for any of the figures, you are going to get the logic to be the same. So let us find out the value of this question mark. So that means what we need to do. Simply we need to add the first and third row. But third row में एक number unknown है, तो that's why I'm not going to focus the first and the third row. I'm going to focus on the second and the fourth row. ठीक है? That is 4, 4, 9, 2 and 6, 8, 4, 4. ठीक है? So 6, 8, 4, 4. So that means 4 plus 2 6, 3, 1, 8 plus 3 carry 1, 11. So I have my sum as 1, 1, 3, 3, 6. यानी कि इन दोनों का सम मेरे पास आ चुका है. Obviously इन दोनों का सम भी 1, 1, 3, 3, 6 होना चाहिए. So what I'm going to do, I'm simply going to subtract this number from the sum. सब लोगों को समझ में आ रहा है कि अगर मैं इस टोटल में से इसको हटा दूंगा तो आई विल बी गेटिंग द रिमेनिंग नंबर. एबल टू अंडरस्टैंड द आइडिया? सो यानी कि यहाँ पर आई विल गोइंग टू सबट्रैक्ट 3, 2, 8, 4. सो 3, 2, 8, 4. You have this 1, 1, 3, 8, 3, 6. So 6 minus 4 is 2. 13 minus 8 is 5. This is going to be 2. 2 minus 2 is going to be 0. 11 minus 2 is going to be 8. So 8052. You can see that 052 is there. This number must be 8. So I hope ये question भी आपको समझ में आएगा. Now let me tell you the final question probably. Okay, not the second last question, but the easy one. यहाँ पर in fact you even won't require to move your pen. What has been told? It is 12 o'clock. So आपकी घड़ी में कुछ इस तरह के टाइम दिख रहा है. 12 o'clock. This means hour hand and the minute hand. So this question is from the chapter clock, and the hour and the minute hands are aligned exactly one over another. Obviously 12 o'clock है तो इस तरह से दिखेगा. Both hands move continuously. After how many minutes will they meet again? So आपको पता है कि exactly 12 बजे we have our hands to be overlapping, the hands of clocks to be overlapping. तो अगला आपका approximately 1:05 पर overlap करेगा ना. That means this is 12 o'clock. When it is going to be 1, this is 1, this is 2, let us say. तो अगला जब आपका overlapping होगी तो बच्चों कितनी बजे होगी? Can I say it is going to be at 1:05? Approximately 1:05. I'm not confirming that exactly at 1:05, but some around at 1:05. That means after some around 65 minutes, right? So the answer to this question is 65 only. But if you wish to find out exactly how many minutes are required, this is the approximate value I'm telling you. So let me tell you one formula. Theta is going to be 11 by 2 of 11 by 2 times of m minus 30 times of h, where m and h represents the minutes and hours respectively. तो मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने 11 by 2. Now minutes is, now I have to find out कि इतना तो मुझे समझ में आता है ना कि ठीक है कितनी बजे मुझे मिल रहा होगा. तो मिनट की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है, ठीक है, किस तरह से हम अप्रोच करेंगे बच्चों? इसका आइडिया बहुत सिंपल है. मुझे इतना समझ में आना चाहिए कि एट 1:समथिंग पर मेरा एंगल बनने वाला है. सब लोगों को समझ में आ रहा है? तो यहां पर आप लोग क्या करेंगे बच्चों? आपके m की वैल्यू और h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे होंगे, ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ 65 मिनट्स. आई होप ये आइडिया सब लोगों को क्लियर हुआ होगा. ठीक है, इवन इफ यू डोंट यूज दिस फॉर्मूला, आप डायरेक्टली बोल सकते हो 65 मिनट्स इसका आंसर है एज ऑफ नाउ. ठीक है, सो सभी लोगों को आई होप क्लियर हो रहा होगा. ऑल द ऑनलाइन पीपल, आई एम एंटरटेनिंग फॉर योर चैट बॉक्स. सो लेट अस मूव टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन. सो यहाँ पर भी इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल होने वाला है. क्या बोला गया है? यू हैव बीन अ कैलकुलेटर दैट लुक्स in the image given below, given that you are allowed a total of 6 key entries. सिर्फ 6 ही की 6 बार एंटर कर सकते हो, 6 कीज को आप एंटर कर सकते हो, of which you must use at least one key or an operator and another key entry for the equal to symbol and the largest number that you can calculate. So somehow using some calculation, whether it is addition, subtraction,
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, आपको इस कैलकुलेटर का यूज करके कुछ ऐसा करना है कि कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि थोड़ी देर बाद आप लोगों के सामने सोनाली मैम आने वाले हैं। शी इज गोइंग टू टेल यू हाउ यू कैन मैनेज योर टाइम फॉर योर टारगेट एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इसलिए मैं इसका आंसर क्विकली बता रहा हूँ आप सभी लोगों को। इतना तो, बट सोचेंगे कैसे, मैं आपको सोचना सिखाऊंगा, डोंट वरी, मैं आपको सिर्फ आंसर दे दूंगा, मैं सोचना सिखा रहा हूँ कि सबसे बड़ा आपको लार्जेस्ट नंबर चाहिए, तो लार्जेस्ट नंबर कैसे आ सकता है? या तो प्रोडक्ट करके ही आ सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट इज गोइंग टू गिव यू अ वेरी लार्ज रिजल्ट। लार्ज रिजल्ट चाहिए तो वी शुड बी थिंकिंग ऑफ द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर कौन है? फ्रॉम 0 to 9 इट इज 9। तो क्या मैं 9 into 9 कर दूं क्या? ऑब्वियसली नो, आपको 6 एंट्रीज है ना, जिसमें से एक इक्वल टू की है, जैसे 9 into 9 इक्वल, तो आप देख रहे हैं यू हैव 1 एंट्री, यू हैव 2 एंट्री, यू हैव 3 एंट्री, एंड दिस इज गोइंग टू द फोर्थ एंट्री। बट आपके पास चॉइस 6 एंट्रीज हैं, तो आप क्या करेंगे? लेट अस डू वन थिंग। दिस इज 9, द फर्स्ट एंट्री, देन पिक डबल जीरो, मल्टीप्लाई 900, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री, फोर्थ एंट्री, फिफ्थ एंट्री, equal to 81,000. This is what your solution is going to be. So this was all about today's session, my dear people. Before I move, before I go, I would like to go give you one homework question for you. You can try solving this question. You can take the screenshot of this question. This question is going to be very interesting when you solve it. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एंड वन मोर क्वेश्चन आई वुड लाइक टू गिव यू फॉर सॉल्विंग इट, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर, देन I will be taking you to the next question, and you can solve this question as well. This is another very good example of chapter distance and direction. ठीक है, सो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डू लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हम इसको अगली जो वर्बल रीजनिंग का जो सेशन होगा उसमें डील कर लेंगे। सो एज ऑफ नाउ दैट्स इनफ फ्रॉम माय साइड। Now, before I move ahead, do not forget to subscribe to our channel if you're new to this channel. Also, you can access to the study material given in the description box. So that's enough from my side. Take care, everyone. Thank you. Bye.